See, good morning students. This is the example 12.3. How much current will an electric bulb draws from a 220 volt supply? यानी दिया गया है आपको 220 वोल्ट सप्लाई दी है और पूछ रहे हैं हाउ मच करंट इट विल ड्रॉ इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम. जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1200 ओम. B part of the same question, how much current will an electric heater coil draw? Electric heater coil कितना current draw करेगी? From a 220 volt source, voltage दी आपकी 220 volt. If the resistance of the heater coil is 100 ohm, जो resistance है heater coil का वो आपका 100 ohm है. So first we will see the first part. How much current will an electric bulb draw? यानी कि वैल्यू ऑफ आई आपको कैलकुलेट करनी है. वैल्यू ऑफ आई यू आर सपोज टू कैलकुलेट. इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, आपका रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम. फर्दर एक बार फिर देखो क्वेश्चन को. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ? करंट निकालनी है आपको, कितना ड्रॉ है फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स. वोल्टेज दी आपकी 220 वोल्ट. हियर if resistance of the bulb filament is 1200 ohm, resistance दिया है 1200 ohm. Now think which formula you can apply. Ohm's law we are applying here. So V is equal to IR or I is equal to voltage upon resistance. Voltage how much? 220 volt and resistance is 1200 ohm. So 1200 divide, then final answer is 1.8 after solving. And what is the unit? Ampere. Second part of the question, how much current will an electric heater coil draw? Same type, you are supposed to calculate what electric current I from a 220 volt source. Voltage दी आपके again same 220 volt. If the resistance of the heater coil is 100 ohm, या resistance दी आपका 100 ohm. Again think which formula you can apply. Formula is same. V is equal to IR Ohm's law. V is equal to IR or I is equal to voltage upon resistance. Voltage is given, resistance is given. Voltage how much? 220 and resistance 100 ohm. Finally, when you solve, this will give you 2.2 amperes. Thank you.